guys. Good evening. Good evening. Good evening. अरे निकलो भाई. Hi guys. Can you guys quickly confirm if you can hear me? Hi Remy. Good evening. Can you all quickly confirm if you can hear me? Hello Ashik. Ayush. First thing tomorrow. First thing tomorrow. अब पता नहीं यार. Try करूँगा. Good evening. Good evening everybody. Cool evening Munna. Hi Achal. Hello Shivangi. Hello Mansi. Hi Abhay. All right. Hello Vineet. Good evening Kanika. Hi Rohit. Hello Arshita. Hi Uday. Hello Ivanshi. Good evening. Good evening Ashik. Good evening Harshita. Let's begin. This is the second lecture on ratio and proportion. Don't start drooling guys. इस सेशन का और इस पिज्जा का कोई संबंध नहीं है, but yes. If your this year's resolution was to cut down some calories, then definitely don't look at the lower right corner of this picture. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai. I have 6+ years of experience teaching quantitative aptitude, and I've trained over 2 lakh students. Please don't forget to follow hashtag CAT Live daily on Instagram, and please get yourselves added to these two groups. Extremely important that you are a part of these. Hi Baba. No issues, no issues. Aja. Hello Yogita. Hi Anish. Hello Abhay. तो ये दोनों ग्रुप में ऐड हो जाओ guys. The description, the link for these two groups are in the description. If you are already not a part of them, please ensure that you become a part of these two groups. And if you're planning on taking your CAT preparation seriously, then go ahead, take the subscription for Unacademy Plus. You can pick up any one of these 5 packages. The best ones are the 12-month and the 24-month one. Please don't forget to use my referral code Surana Live when you do that. The moment you use it, the prices will get slashed by 10%. That means for less than 800 rupees a month, you can actually crack CAT. शुरू करें? 7+ तो नहीं हुआ होगा. 7 हो चुका होगा I guess. 7 नहीं, 7 भी अप्रैल में होगा शायद, मार्च या अप्रैल में होगा, बट या वेरी नाइस आयुष. cheers buddy, cheers. चलो शुरू करें. Shall we begin? If you haven't hit like on this video already guys, go ahead and do that. Like कर दीजिए वीडियो पे. Hello Vasundhara. Hi Harshmeet. Let's begin. What we will be focusing on today are comparison of ratios as well as types of ratios. Now we might be wondering that sir, these are too technical, for a question in CAT, but then they are not. Right? In the previous year questions, if you go ahead and check, there will be a couple questions that deal with these kind of technicalities. So it's very important that you go ahead and uh, ensure that you understand this, and I don't want you to miss out a question in any one of the tests, not just CAT but any test that you're planning on taking, just because of the small technicality, है ना? चलो, so let's start with comparison of ratios. When you have to compare two ratios, A is to B, if you have to compare A is to B and C is to D, there are two ways in which you can do that. One, using fractions. That is, you compare A by B to C by D. Yes.
Multiple ways of doing it. You can use decimals or you can use the LCM method. Take the LCM of the second terms B and D and then compare the numerators. Yes, that's one way of doing it, and the other way of doing it would be using percentages. That is, figure out what percentage of B is A. Yes, that is A by B into 100, and compare it with C by D into 100. Right? This is very similar to fractions, just that you don't have to get involved in finding the LCM, and so you can do it directly by figuring out the percentage, or even approximation would help you here. Yes, that being said, let's go ahead, try out an example, see कि ये कैसे work करेगा. The timer still has 3 minutes in it, but I don't think you would need 3 minutes. But चलो शुरू हो जाओ. Hi Sudeep, कैसे हो भाई? How are you? I know. आ गया. आपके इमोजी से तो लग रहा है आप खुश नहीं हो. चलो बात करेंगे उसके बारे में. Go ahead, send me a message on Telegram. We'll talk about it. ठीक है सुदीप? आज किसी के घर पे सुताई, किसी के घर पे मिठाई बटी है. वेरी नाइस विनीत, एकदम राइमिंग टू द पॉइंट. इतना इतना ऑन पॉइंट राइमिंग किसका था? किसी के घर पे सुताई तो किसी के घर पे मिठाई. This is your version of किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम. वेरी नाइस बेटा जी, बाबू जी. And also Sudeep, don't worry if you did not get what you expected. आगे के एग्जाम्स पे थोड़ा ध्यान दे दो. If you are planning on giving XAT, if you are planning on giving SNAP, जो कि अगले एक हफ्ते में है, XAT तो कल ही है. Alright, Vineet says B. Now I understand direct comparison वाले questions आएंगे नहीं आपके. Direct comparison वाले questions नहीं आएंगे, but then if they do end up, then you can डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, बट दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन. जैसे हमने कल देखा था ऑपरेशंस ऑन रेशियोज देखा था, है ना? कभी कुछ ऐड करने पे वैल्यू इंक्रीज होता डिक्रीज होता रेशियो का. सो इफ यू वांट टू कंपेयर रेशियोज, यू कैन गो अहेड एंड यूज दीस कॉन्सेप्ट्स देयर. ओके, सुपर्ब. ऑप्शन बी बोल रहे विनीत. योगिता सेज डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. हाय काजल, हेलो. अनिमेश सेज ए. Ivanshi, Rohit, Snehal, Ayush, Akshay say B, Tanay says A, Siddharth and Uday say B. Sudeep, ये क्या है? ये क्या है? It looks like you intentionally put up these numbers. Chalo, all right, let's look at this. They're asking which one of the following ratios is the largest. That means all you have to do is compare 3 is to 11, compare 2 is to 7, and 5 is to 18. Right? Let's do that. First, let's give a shot with fractions. एक बारी fraction से try करेंगे इसको. Yes. So what do we have? We have 3 by 11. Compare it with 2 by 7. Compare that with 5 by 18. Yes. Fastest way of doing that would be finding out the LCM of 11, 7 and 18. You know 11, 7 and 18 are co-primes. मतलब इनमें कुछ भी common नहीं है. That basically means their product is going to be the LCM, है ना? 11 into 7 into 18. 11, 7 and 18 का product होगा. I don't want you to sit and calculate this. जहाँ पे approximation possible है वहाँ पे करो approximation. Right? So let's go ahead and do that. यहाँ पे क्या होगा? नीचे में 7 and 18 मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर भी 7 and 18 होगा. Yes, यहाँ पे क्या होगा? 11 and 18. Here also 11 and 18. And here you would have 7 and 11. Here also 7 and 11. Yes. तो जहाँ कहीं भी हो सके approximation करो. See, this is what 21 times 18. डिनोमिनेटर सारे कॉमन हो गए, मतलब कैंसिल हो जाएंगे. ऊपर में क्या बचेंगे? 21 times 18. Can I say would be a little over 360? Yes, 21 times 18 exactly 378. Yes, keep that there. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 times 18. See, 21 times 18, 22 times 18. This basically means that your
second ratio will definitely be greater than the first one, right? So option A जिनने भी बोला है, this is definitely wrong. Are you getting it? यहाँ पे क्या है? See, let's go ahead. 21 into 18 है, और यहाँ पे क्या है? You have 22 into 18. So it's very much clear that the second ratio is greater than the first one. So let go of option A. Option A eliminated. Now all you have to do is compare the second one and the third one. If you want to compare it, what would you do? You have 35 into 11, that is 350 plus 35. Yes, which is 350 plus 35 is 385. This is going to be how much? 360 plus 36, which is 396. So this is 396, this is 385, which is a greater ratio. The second one is. So option B is your right answer. Here, are you getting this? You can, Sakshi, you can. Yes, you can definitely go ahead and do that as well. Okay. So this is one way of doing it. The other way of doing it would be involving percentages, right? So let's do this. 3 by 11 we know is going to be how much? You know, 3 is to 11 is 3 by 11, which is 27.27 bar percentage. Yes, 2 by 7 is how much? 2 by 7 is 28.5714 परसेंटेज है ना. 2/7 सेवेंथ का रेशियो. अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, then go ahead watch परसेंटेज पे lecture 2. I guess we did the calculation part there है ना. If you don't understand what I'm doing in green, go ahead watch lecture 2 of percentages. You would understand. 5 by 18 is half of 5 by 9. 5 by 9 is 45.45. उसका half करोगे तो कितना होगा? 27.77 बार हो जाएगा, है ना, approximately. So look at this. These two options. Option A is definitely out, too less, 27.27. Option B and C are very close to each other. So option C is smaller than option B. So option B is your right answer. Clear? Done? Superb. Correct, Vineet. Very nice. So if you use percentage, you don't really have to get involved in doing all this. ये फालतू के calculations आपको करने नहीं पड़ेंगे. But sometimes if the answers choices are very close to each other, then you might want to do this. Done? If you've understood, everybody, एक बार yes बोल दो और वीडियो पे like कर दो ताकि we can move on to the second question. चले? This is done, right? चलो. Here you have to arrange this in the ascending order. You might not have to do this in the actual test, but speed देखने के लिए है ये. 3 मिनट दिया हुआ है, but let's not take 3 minutes for this. Quickly try this out. You have to arrange them in ascending order. Ascending order. इसको इस रेशियो को A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो, इसको D ले लो. बताओ क्या ऑर्डर होगा? A, B, C, D के टर्म्स में क्या ऑर्डर होगा? फटाफट बताओ. Quick. This is just the starting, guys. Beginning है, basic questions है. Don't worry about it. We will go into advanced questions. You know how I roll. करो जल्दी से. Hi Sadhana, good evening. All right, quickly try this one, guys. Okay, Animesh says CABD. How about others? Animesh बोल रहे हैं CABD. Arsh also says CABD. Sparshi says DBAC. Ascending order का मतलब क्या है? What do you mean by ascending? Guys, please don't get confused with this. Akshay says BCAD, which is a different thing. Okay. Ascending मतलब क्या? Smaller value to greater value. Yes, smallest to greatest इस order में arrange करना है हमें. CABD, correct विनीत, छोटे से बड़ा. 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 छोटे
लाइक करंट वो मीम ट्रेंड नहीं चल रहा है, यूएसए में कैसे बात करते हैं, इंडिया में कैसे बात करते हैं, ऐसा यूएसए में बोलते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इंडिया में बोलते हैं छोटे से बड़ा, राइट। डीवीएसी, चलो ठीक है, फटाफट से ट्राई करेंगे। 1:3 परसेंटेज में करेंगे खत्म, ठीक है। ए क्या है, 1:3, दैट इज 33.33%। 5:12, yes, pay attention guys, 5:12, 1:12 is 1 by 12 is 8.33, so 5 by 12 is going to be how much, 8.33 into 5, yes, which is going to be 41.66 bar, right? Last में एक 5 रहेगा, but yeah, 5 by 12 is this, so option B is what, 41.66 bar percentage. Your third ratio, option C, is 4:15. See, look at this, 4:15 करना है ना, 4:15. This has to be what, a little greater than 25%. कैसे, approximation कर रहा हूँ, 4:15 is a little less than, it is a little greater than 4:16, which is nothing but 1 by 4, 25%. That means this will be a little greater than 25%, not too big either. Yes, 4:15 will be greater than 4 by 16, will be less than 3 by 15, which is 1 by 5. So 20 say, sorry, will be a little greater than 4 by 16 and a little less than 5 by 50, है ना? Which is nothing but 33.33. So 33.33 से छोटा, but 25 से ज़्यादा. And your fourth one is what? 2:3, which is 2 by 3, 66.66%. So it is clear that the smallest is what? Option C. Start with C, then it will go to A. That is A बोल के B लिख रहा हूँ. A, and then you have B, and then you have D. Right? This is the ascending order. C, A, B, D. Done? Yes. Cool, everybody. You can use whatever method you want to use. देखो मैंने यहाँ पे approximation किया क्योंकि यहाँ पे cool था. It was okay for me to approximate. जहाँ पे ठीक है approximate करना वहाँ पे करो, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मत करो, ठीक है? करेंगे next. Shall we move on to the next one? Alright. Here's the next one. You have to compare, find out which of the two ratios are greatest. Okay. These are in mixed fractions, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना. हाँ, जिनने भी उल्टा किया, जिनने भी DBAC बोला है, ascending और descending में कंफ्यूज हो गया, which is okay, but then टेस्ट पे मत करना. तो आई स्टिल रिमेम्बर मेरे स्कूल में बोला था कि ascending A से चालू होता है, दैट मीन्स छोटे से आपको चालू करना है, डिसेंडिंग D से चालू होता है, मतलब ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है, राइट? दिस वाज हाउ माय मैथ टीचर taught मी, एंड अभी तक याद है मेरे को. तो A से स्टार्ट होता है ascending, मतलब स्मॉलर से स्टार्ट करो, D से जो चालू होता है वो ग्रेटर से स्टार्ट करो, क्योंकि D इज ग्रेटर देन A. चलो फट से करो ये वाला जल्दी. ऑल वी हैव टू डू इज फिगर आउट इन दोनों रेशियोज में से कौन से सबसे बड़ा है. Second one, Sparshi, Ayush, Gauri say the second ratio is greater. चलो इसको A और B बता देते हैं. Let's call this A and B. Which is a greater one? B1. Okay. Vineet says A. Vasundhara says A. Everybody else says B. Tanay says A. Achal, Yogita, Mansi say B. Animesh says B. Rohit says B. ठीक है. चलो. Which is very nice. क्योंकि दो ही ऑप्शन है और लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं A B. So let's first convert these mixed ratios into improper ratios. है ना, mixed fraction में जो है 2 1/2 को proper में लिखो. So 2 1/2 is nothing but 2 into 2 4 plus 1 5, which is 5/4 is to 12 15/4. Correct? Yes.
On the other hand, you have what? Ratio B is going to be 3 by 2 is to 11 by 6. Agreed? अब इनको कंपेयर करना है अपने को, राइट? वी हैव टू कंपेयर दिस. एक सेकेंड, ये 5 by 4 नहीं होगा, ये 5 by 2 होगा. तो इनको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, बेसिस को इक्वल करा दो. 2 4 6 है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 6 इज 12. तो सबको 12 के टर्म्स में लिख लो, सबको 12 के टर्म्स में लिख लो. दैट मींस आई एम गोना हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 6. So this also with 6, which will make it 30, is to multiply this with 3, this with 3, this is 45. Yes, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Multiply this with 6, you will have 18. Multiply this with 2, you will have 22. If you want to reduce this further, go ahead, be my guest. ये क्या हो जाएगा? 2 is to 3, 15 twice, 15 3 times. और ये क्या हो जाएगा? This will become how much would this become? This would be 9 is to 11. अब percentage लगा लो. At this point you can apply percentage. What would you get? क्या हो गया? अभी percentage लगा लो. This is 66.66 percentage. This is going to be 9 by 11 is 9 multiplied by 9. Correct? 9 by 11 is nothing but numerator multiplied by 9. अगर ये वाला shortcut नहीं समझ में आ रहा है तो go ahead and use what? Use what? Go ahead and watch L2 of percentages. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 81.81 परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली. तो कौन सा ग्रेटर है, 66.66 और 81.81? 81.81 is greater. This is greater. That means 9 is to 11 will be greater. That means 3 by 2 is to 11 is to 6 will be greater. That means your second ratio is the larger one. Clear? So everybody who said second ratio, very good. Everybody who said the first ratio, please figure out क्या mistake की है आपने यहाँ पे. What went wrong? What was your error? Done है क्या? किसी को कोई issues यहाँ पे, कोई confusions? So we've used a combination of both LCM method, LCM भी use किया हमने, and percentages also we've used. Yes, दोनों का इस्तेमाल करके we've gotten the answer to this. Are we done? They're asking which one of these is largest. Any questions, confusions here, guys? Done है तो yes बोल दो, like कर दो और आगे बढ़ेंगे. विनीत अगर reduce भी नहीं किया तो भी 30 is to 45 is 66.66 percentage. 18 is to 22 is 81.81. You can use that, or you can take बाद में आगे जाके आप you can take the LCM of 45 and 22 also. Both 45 and 22 are co-primes, मतलब आपको 45 into 22 करना पड़ेगा, which is 990. है ना? Done? चलेंगे next. Shall we move on to the next one? तो इससे थ्रू अपने का क्या हो गया, अपना क्या हो गया? Comparison is done. Yes. So throughout में comparison में कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ेंगे. Comparison check. आज मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा बकवास आ रहा है क्योंकि ये आई चेंज द सेटअप अ लिटिल बिट. यूज्ड टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. बेयर विथ मी. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट. यस बोलो, आगे बढ़ेंगे. जोर से बोलो. नो, आई डोंट वांट जय माता दी. यस बोलो. चले आगे. नेक्स्ट. चलिए. Okay, before we move on, this was the batch I was talking to you about all this while. ये live है अभी. This is an exclusive weekday evening batch which will start from 6:30 p.m. This includes quant, verbal and LRDI. Quant मैं लूँगा. Verbal will be taken by Ms. Bhagyashree Ghosh, and LRDI will be taken by Mr. Sameer Sardana. Yes. These two educators are on the top, top 10, top 20, top 30 में आते हैं ये लोग. मैं इसमें छोटा बंदा. This is starting from Monday, that is day after tomorrow. आपके पास 2 दिन है to decide what you want to do. Starting from Monday, the link for this is given in the description if you want to do. ठीक है, चलो.
Now let's move on to types of ratios. क्लियर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, ये क्या ये सबका इश्यू है? इज एवरीबडी फेसिंग दिस? क्योंकि मेरे को एकदम क्लियरली दिख रहा है, मेरे को कोई भी इश्यू नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ रेशियोज ना. ये पूरा टेक्निकलिटी में है तो हम लोग इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, एग्जांपल्स में घुसेंगे, ठीक है. But let's quickly discuss what are the different types of ratios. So the first one we will be talking about is something called a duplicate ratio. Yes, ratio होता है A is to B, duplicate क्या होता है? That's what, right? Then you have the sub duplicate. This might look like a sir ऐसा सब कौन पूछता है, but there was a question like this asked not only in CAT but also in XAT. So it's better that we know all this, right? So duplicate, sub duplicate, then you have triplicate, sub triplicate. ये आपको स्कूल की याद दिला देगा. Triplicate, sub triplicate, and the last type that we will be talking about is a compound ratio. ठीक है, compound ratios. Done. चलेंगे इसमें. चले next. चलो. Let's talk about duplicate and subduplicate. ठीक है, duplicate का मतलब क्या है, subduplicate का मतलब क्या है. If you have a ratio A is to B, if you have a ratio A is to B, तो उसका duplicate ratio is going to be A square is to B square. बेसिकली आपका जो A by B है, इस रेशियो को आप होल स्क्वायर कर रहे हो. A square is to B square. That's called duplicate ratio. On the other hand, सब डुप्लीकेट क्या होगा, गैस करो, जल्दी से गैस करो क्या हो सकता है. If duplicate means duplicate ratio of A is to B is A square is to B square, then what will be the sub duplicate ratio of A is to B? जल्दी. Quick. Right, आयुष. ये आपकी जिंदगी के बहुत कीमती 2 दिन है. Right, Sparsh, very good. Sparshi says it is A power 1 by 2. This is A power 1 by 2 is to B power 1 by 2, which is nothing but square root of A is to square root of B. ठीक है. Superb, Ayush, very nice. Correct योग्यता. Done. So this is duplicate and sub duplicate. ये हो गया डिस्कस. इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, वरना लेट्स मूव ऑन टू ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट. ठीक है. ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, इफ यू हैव अ रेशियो A is to B, तो गैस करो, अगर डुप्लीकेट में स्क्वायर किया हमने तो ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे. अगर डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर किया था तो ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे. एनीबॉडी? गैस गैस गैस, जल्दी से गैस करो. राइट, ब्यूटीफुल आयुष. तो A is to B का होल क्यूब बेसिकली. Yes, that's nothing but A cube is to B cube. Yes, A cube is to B cube. Beautiful. Vinit, Achal, Sarveshwari, Spashi, very good. अगर ट्रिप्लीकेट क्यूब है तो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा. If triplicate is cube, then what will be sub triplicate? Quick. अगर ट्रिप्लीकेट क्यूब है तो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, क्यूब रूट होगा, है ना. So that is third root of A to third root of B, which is the same as A power 1 by 3 is to B power 1 by 3. Done. Questions में चलेंगे. चलो. Try this question. This is a theta question. आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिफाइड लैंग्वेज है. Don't fall for the trap. This is a theta question जो नॉर्मली रेशियोज में आता नहीं है, बट अगर आया है तो I want the right answer to this. Cheers guys. Three minutes on the timer.
If you haven't hit like on this video already guys कर देना ठीक है. Quick guys answers. You have a minute and a half left now. Yogita says 1. साक्षी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले केस में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. I want you to ensure that you know this. Rohit says 1. Yogita and Rohit both say 1. How about others? गौरी says 2197 is to 1. is to का ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको? Is there a button on this keypad that says is to? is to नहीं है मतलब आप is to में आंसर नहीं दे सकते guys. You cannot answer in the terms of 1 1 1. Everybody says 1. Sir duplicate ना सब duplicate. नहीं समझा मैं आयुष. I didn't understand your question. So anybody who's answering in is to, please ensure that your keypad has it because it will not. तो आपको divide करके फिर आंसर देना पड़ेगा. lot of you are saying 1. Let's go ahead and quickly answer this, shall we? What are they saying? Find the ratio of the second term of the duplicate of this ratio. ठीक है? 324 is to 169. This is the actual term. What will be the duplicate of it? इसका duplicate क्या होगा? 324 square is to 169 square. Yes. अपने को क्या चाहिए? सिर्फ second term 169 square. The second part of this is saying what? To the first term of the subtriplicate. Yes, of what? 2197 is to 1331. Sub triplicate. That means cube root of 2197 is to cube root of 1331. But we don't care about the second part here. We only want the first part. Yes. तो फटाफट से करके देखते हैं ये क्या निकलेगा. What would be 169 square? See what is common between 169 and 2197? Both are powers of 13, right? 169 is, चलो करते हैं, 169 square is to cube root of 2197. Yes, 169 square is 13 to the power 4 is to cube root of 2197 is how much? Anyone? Cube root of 2197. कौन बताएगा? What is cube root of 2197? Cube root of 2197 is 13. Agreed? Yes. So what are you left now? What are you left with? If you cancel this out, you will get 13 cube is to 1. 13 cube is to 1 is nothing but 2197 is to 1. यहाँ पे जो वैल्यू पूछा है that is after dividing. So what is 2197 by 1? That is 2197 itself. So your answer has to be 2197 and not 1. Got it guys? So जिनने भी 1 बोला है, because a lot of people said 1, please ensure that you don't miss it out. Vasundhara 28551 is what? 13 cube. इतना बड़ा वाला वैल्यू कैसे होगा? How will you have such a big value? 10 cube is 1000. 10 cube is 1000. 13 cube cannot be 28,000, right? Acha, you've given me 169 square. 169 square, is it? That is also 28,561. एक बारी check कर लो क्या mistake हुई है. Right, no योग्यता. तब duplicate of the second term नहीं, duplicate बोला है. ठीक है.
डन एवरीवन, क्लियर ना? तो यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, यू माइट गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, है ना? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कैट में, एग्जैक्ट में, इन प्रीवियस ईयर्स, so you can go check out. पुराने पेपर्स में है, नए में नहीं है, बट यू नो देयर इज नो गारंटी कि वो पुराने पेपर्स जैसे क्वेश्चन ना पूछे, है ना? उनका क्वेश्चन टाइप हर वक्त अलग तो होता नहीं है, तो दैट्स दैट। डन, चलेंगे आगे। चलो ट्राई दिस वन नाउ, जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इन केस आ गया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं है। गो अहेड, क्विकली ट्राई। वसुंधरा 161 कहाँ से आया? 161 कहाँ से आया? या आपने क्या बोला है? अच्छा, यू टोल्ड 28,551, तो वो टाइपो था क्या? ठीक है, कोई नहीं। 28,561 is 161 square, but 169 square, but क्यों करना है जब all of them are in terms of 13s, है ना? सिम्बियोसिस पुणे क्या पूछ रहे हो? सर कोई भी आईआईएम के बाद तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। आईआईएम के बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मैं नहीं समझा। आर यू टॉकिंग अबाउट कोई भी आईआईएम में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं या कैसे? बिकॉज नॉट ऑल कॉलेजेस गिव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। है तो भी आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे यू नो फेमस है, या कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे उनका प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है, कहाँ पे एवरेज सैलरी अच्छा है। यस, ओके। 3:2 says Animesh. Rohit says 3a cube is to 2b. Ayush also says the same. So we have two answers. 3:2, 3a cube is to be 2b. Others? हाँ है, तनय है। Vineet also says the same. Animesh also says the same. Animesh आंसर बदल लिया? चलो कोई नहीं। Okay, alright. Akshay also says the same. चलो डिटरमाइन द सब ट्रिप्लीकेट ऑफ द सब डुप्लीकेट ऑफ द रेशियो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? सब ट्रिप्लीकेट, व्हाट डू यू मीन बाय सब ट्रिप्लीकेट? पावर 1/3 of the sub duplicate of the ratio this, right? So 729 a power 18 का पहले सब डुप्लीकेट करेंगे which is 1/2, फिर उसका सब ट्रिप्लीकेट करेंगे which is 1/3, है ना? is to what is the other thing? 64 पे, sorry, 64 b power 6 पे you again have what? Sub duplicate और उसका sub triplicate. Yes. Look at this. You know that अगर आपको ये नहीं पता है तो ध्यान में रख लो, a power m whole power n is basically equal to a power m into n. तो हम वो यहाँ पे भी वही करेंगे। You have 729, 729 का स्क्वायर रूट करो, फिर क्यूब रूट करो, या क्यूब रूट करो फिर स्क्वायर रूट करो, either which ways. What you want is 729 का sixth root, if you can directly find that, into a power 18 का sixth root, which is a power 18 by 6, है ना? This rule is to the same thing here. 64 पे आप 1/6 लगाओ, and then b power 6 पे आप 1/6 लगाओ, which is 6/6. So what do you have? 729 का sixth root is how much? 3, because 9 cube is 729, so 3 power 2 power 3, which is 3 power 6 is 729. तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा a cube, which is 3a cube is 2. Here you would have what? You know that 2 power 5 is 32, 2 power 6 is 64, तो ये हो गया 2, and this would be b. So the answer ratio is what? 3a cube is to 2b. Yes. इसमें मैंने आंसर चॉइसेस इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं बहुत आलसी था, बट यू अंडरस्टैंड दैट ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस एज वेल। डन, चलेंगे आगे। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। शीतल, तनिष्क, राइट। आयुष, वेरी गुड। योगिता, सर्वेश्वरी, गौरी,
चलो, so with this we are done with duplicate sub duplicate triplicate sub triplicate. अच्छा ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, भूल गया था मैं, करो ट्राई करो जल्दी से। ये भूल ही गया था मैं। दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन अलजेब्रा, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस आप अलजेब्रा में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिर से ट्राई करो। They want you to find the value of x if the subduplicate ratio of a is to b is equal to 3 minus x is to 4 plus x. इसमें आपको you have two choices. You could either plug in the value of a is to b and plug in the value of x. Otherwise, what you can do is करो solve, है ना? So whatever, however you want to take it, you can use algebra or you can use plugging in, whatever that works for you. ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोवाइडेड यू डोंट मेक एनी मिस्टेक, तो फिर फ्लो में आ जाएगा, वरना फिर थोड़ा सा टाइम खा सकता है। ओके, सोमेश सेज ए, सोमेश का आंसर है ए। रोहित सेज बी, ठीक है। अदर्स, यू हैव अबाउट 30 seconds. Okay, Rohit also says A, Achal says B, Somesh A, Akshay A, Tanishq A, ठीक है। Yet again A और B के बीच में, और कोई? Any more answers? चलो, let's first do it using algebra, ठीक है। सबसे पहले algebra से start करेंगे। Yes. So what they want the value of x, but remember, if the subduplicate ratio of a is to b, that basically means root a is to root b. I can write it as root a by root b is basically equal to 3 minus x by 4 plus x, है ना? अब इसको क्या करेंगे? We want x on one side, so go ahead, cross multiply. Cross multiply करने पे क्या हो जाएगा? You will have 4 times root a plus x times root a is equal to 3 times root b minus x times root b. सारे x को एक साइड ले आओ, सारे अदर कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड ले आओ. So what will you have? You will have x root a plus x root b is equal to 3 root b minus 4 root a. X को कॉमन ले लिया, you will have root a plus root b. Here you will have the same 3 root b minus 4 root a. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? It will be 3 root b minus 4 root a divided by root a plus root b, which is what? Option A. तो algebra के थ्रू करोगे तो this would be your procedure. If you try using algebra, this should be the procedure. Otherwise, what you can do is plug in. राइट, आप प्लग इन करके भी कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई प्लगिंग इन नाउ। उसमें क्या होगा? आपको अलजेब्रा पे सर नहीं फोड़ना पड़ेगा, राइट? प्लग इन डिफरेंट वैल्यूज, असम्पशन कर लो। आई डोंट कॉल इट अस्यूमिंग, आई कॉल प्लगिंग इन, राइट? लेट्स ट्राई प्लगिंग इन सम वैल्यूज हियर। पहली बात, x का प्लग इन करेंगे हम। लेट्स से x इज इक्वल टू 2,
If x is equal to 2, then a is to b will become what? 3 minus 2 1, 4 plus 2 6, correct? So what do you have? A is to B is 1 is to 6. तो आप A को 1 ले लो, A will be equal to 1, B will be equal to 6. Try कर लो. One problem here could be that 6 का आपको रूट नहीं निकाल पाओगे, बट ठीक है ना. चलो अब ये प्लग इन करके देखते हैं ऑप्शन ए में ये मैच होता है कि नहीं. अपने को क्या आना है? इसका वैल्यू आना है 2, right? This value should be equal to 2. So let's quickly plug in. What do you have? 3 root b, which is 3 root 6, minus 4 root 1, which is 4 itself, divided by root 6 plus root 1. Yes, this should be equal to 2. फटाफट से ट्राई कर लो कैसे आएगा. How much is 3 root 6? 3 root 6 minus 4 root 1 is 3 root 6 minus 4. Yes, इसको आगे यहाँ पे ट्राई करेंगे. 3 root 6 minus 4 divided by root 6 plus 1. Yeah. If you want, you can go for. If you want, you can go for. नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आना चाहिए. यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्यों नहीं किया? नहीं, they are saying sub duplicate ratio of a is to b is equal to this. दोनों साइड पे सब डुप्लीकेट नहीं बोला है, सिर्फ यहाँ पे बोला है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a is to b is equal to this. This is one term on the left side, this is only on the right side. वरना यहाँ पर भी बोलते हैं is equal to सब डुप्लीकेट of this. ठीक है, डन हिमांशी. यस ओके. तो क्या करोगे यहाँ पे? फिर प्लग इन करो. if you want b to be 4, फिर x का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा आपको. कर सकते हो, कोई हार्म नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है. यहाँ पे कर लो फटाफट से. कॉन्जुगेट निकाल लो. रूट 6 minus 1 मल्टीप्लाई दिस विद रूट 6 minus 1. दिक्कत ही हो रहा है ना, ये वैल्यू से दिक्कत हो रहा है, तो फिर कुछ और ट्राई करो. ट्राई समथिंग एल्स. दिस इजंट वर्किंग. ये और कॉम्प्लेक्स ही कर रहा है इसको. अपने को ऐसा चाहिए कि रूट ए शुड ऑल्सो बी अ होल नंबर, रूट बी शुड ऑल्सो बी अ होल नंबर, एक्स शुड ऑल्सो बी अ होल नंबर, है ना. तो ट्राई करते हैं फटाफट से. ए बाई बी, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू, क्या कर सकते, क्या प्लग इन कर सकते हैं? 3 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स है. एक्स का वैल्यू नेगेटिव प्लग इन करना है. बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा. if you plug in x as 0, तो फिर ऊपर में 3 आएगा, तो रूट 3 निकालना भी प्रॉब्लम हो जाएगा. आई थिंक प्लगिंग इन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा बिकॉज इट्स टेकिंग अस अ लॉट ऑफ टाइम. वसुंधरा, a is to b cannot be 1 is to 4. a is to b को 1 is to 4 करने के लिए x का वैल्यू 2 प्लग इन करना पड़ेगा. तो x का वैल्यू अगर 2 प्लग इन किया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना. ये वही किया था हमने पिछली बार. नहीं बैठ रहा है. ठीक है, प्लगिंग इन isn't working here, so I guess algebra जिंदाबाद. ठीक है, बट इन मोस्ट केसेस यू कैन प्लग इन. x को 0 मत करो प्लग इन, फिर वापस रूट 3 वाला झंझट है. x को 0 मत प्लग इन करो, फिर रूट 3 वाला झंझट है. इफ यू ट्राई प्लगिंग इन समथिंग एल्स, -1, तो 4 हो जाएगा ऊपर, बट नीचे 3 आएगा. -2, -3, -6, नहीं नहीं जम रहा. दिस प्लगिंग इन इजंट वर्किंग. नहीं नहीं छोड़ो, जाने दो इसको, जाने दो, बाद में देखेंगे इसको. ठीक है, आई फिगर आउट अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज. लेट्स सी ए टू बी में अगर कुछ बैठ पाए तो अभी के लिए अलजेब्रा जिंदाबाद. यस, मूविंग ऑन. Let's talk about compound ratio now. What do you mean by compound ratio? So let's say if you have ratios like
A is to B, C is to D, E is to F, या पहले दो लेके करते हैं, ठीक है। C is to D, A is to B and C is to D, तो उसका compound ratio क्या होगा? Its compound ratio is basically first term और first term multiply, that's basically A by B, C by D है, इन दोनों को multiply करना है आपको, that is A into C by B into D, समझ में आ रहा है? This is called compound ratio। ऐसे compound ratio पे क्वेश्चन आया था एक्चुअल कैट में, yes, so you have to be careful here। compound ratio क्या है? just first terms multiply कर लो, न्यूमरेटर सारे multiply, डिनोमिनेटर सारे multiply। अगर तीन है, if you have three here, let's say if you have A is to B is to A is to B, C is to D, E is to F, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे वापस E by F multiply कर दोगे, so this will become ACE by BDF, clear? Done? चलेंगे नेक्स्ट। मेरा परसेंटेज का वीडियो कहाँ है? यहाँ पे तो था मेरे पॉकेट में, कहाँ गया? इधर ही कहीं रखा था मैंने, नहीं मिल रहा अभी। वसुंधरा, इसी प्लेलिस्ट में देखो ना, इसी प्लेलिस्ट में या नीचे प्लेलिस्ट करके ऑप्शन रहेगा, चैनल पे जाओ, चैनल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट करके ऑप्शन रहेगा, वहां पे है, प्रोपेल बैच के नाम पे ही है, या फर्स्ट स्टेप टू कैट के नाम पे होगा, चेक करो जल्दी से। Alright, quickly go ahead, answer this guys। कंपाउंड रेशियो पूछा है 2:3, 9:14, 14:27, इसको हम थीटा क्वेश्चन कर सकते थे, बट ठीक है, नो इश्यूज। The point here is to understand the concept behind this, तो वो अपन करेंगे। अच्छा आयुष, तो आप अभी कॉमिक्सतान के जज हो गए आप अभी कॉमिक्सतान के जज हो, आप अर्चना हो, हैं करेंगे या फिर लेम वाला एक्सप्रेशन दिखाएंगे, ये क्या है? 2:9, 2:9, 2:9, 6:27, 2:9, alright। What is the compound ratio of 2:3? That is 2/3, 9/14 and 14/27, ये पूछा है ना? तो what would you do? सारे न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई, सारे डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? You will have, this is once, this is thrice, this gets cancelled out completely, which is equal to 2/9, yes। तो compound ratio क्या हो जाएगा इसका? 2:9। अगर ये थीटा क्वेश्चन होता, तो आपका आंसर क्या होता? 0.2222, जो भी अप्रोक्सीमेट करने को बोला है कर देते हैं। डन? चलो अगला क्वेश्चन, ट्राई दिस नाउ। व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस? वापस क्या है? अलजेब्रा मिक्स है इसमें। इसमें मैंने आंसर चॉइस नहीं दिए हैं, आई हैवंट गिवन आंसर चॉइसेस, क्योंकि लाइक आई सेड आलस आ रहा था, बट ट्राई करो। दिस इज नॉट अ टीटा क्वेश्चन, ये टीटा क्वेश्चन नहीं है, ये टीटा नहीं है, ये डेफिनेटली अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल इसका आंसर कोई नंबर में एंड हो, किसी रियल नंबर में एंड हो, वेरिएबल ही ना हो, तो अलग बात है, बाकी ये थीटा नहीं है। क्विक। अच्छा, कई लोग अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं, ये देखो कैलकुलेटर भी बोल रहा है कि स्प्रेड लव, क्यों नहीं कर रहे आप लोग? हाँ जी, ओके। स्पर्शी से p minus q whole power 4, ठीक है। हाउ अबाउट अदर्स? एक आंसर चॉइस ये है, एनी अदर आंसर्स?
सर्वेश्वरी also says p minus q whole power 4. ठीक है, मैं ऑलरेडी लिख दिया है. Others? Hi Himanshu, hello. Good evening. p minus q whole power 4. Everybody says that. Super. ये s क्या है? s क्यों आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, p square plus q square बोल रहे हो क्या? You're saying p square plus q square. Hi Priyanshu. Tanishq says p minus q by p plus q whole square. ठीक है. डन. ठीक है, चलो फट से ट्राई करेंगे. लेट्स डू दिस. टाइम भी हो चुका है. So what do we have here? P square minus q square. P square minus q square is 2p square plus q square. So by p square plus q square into p power 4 minus q power 4 by p power p plus q whole power 4. ठीक है, ये गलती मत करना. So what would you have? You would have p square minus q square. ठीक है, काम करते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे. p minus q into p plus q into p power 4 minus q power 4 is basically what? P square minus q square into p square plus q square divided by, you have p square plus q square into p plus q whole power 4. So we can let go of p square plus q square. P square plus q square चला गया. You will have what? p minus q into p plus q. वापस यहाँ पे क्या है? p square minus q square. So p minus q whole square into p plus q whole square by p plus q whole power 4. ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा, ये हो जाएगा twice. So you will have p minus q by p plus q square दोनों साइड पे, या होल स्क्वायर, वॉट एवर. तो ऑप्शन सी, जिनने भी बोला, ये किसने बोला? Who said this? P minus q by p plus q whole square. Tanishq. Tanishq. That would be the right answer. Yes. इसका क्या है, एक बार चेक कर लो. Please check this. Please check this. Right, Tanishq. Very good. ये दोनों जिनने भी बोला एक बार चेक कर लो. See if I don't think p minus q whole square by p plus q whole square will be p minus q whole power 4. नहीं वसुंधरा, p minus q the whole square होगा. p, look at this. p minus q यहाँ पे है, इसको भी मैं expand करूंगा. If I expand this, I'll get what? p minus q into p plus q. तो p plus q दो बार है, that is why p plus q the whole square. p minus q दो बार है, इसीलिए p minus q the whole square. Got it? वसुंधरा? So p minus q the whole square by p plus q the whole square. Done? खत्म खेल? Everybody? Sure. So this would be the end of our session, but before you leave, I want you all to hit like on this video and listen to what I have to say. The iconic batch has started on CAT. This is the new launch of it. 28 December se hai. The mentors would be all alumni of esteemed B schools. You will get a personal mentor, and there will be a separate OMETS ka preparation. And there is a ask a doubt feature जहाँ पे आप you can ask doubt. You can ask a doubt here, click a picture, highlight it, send it, and the solution would be available to you 24/7. This is happening tomorrow, guys. ये कल हो रहा है. This is tomorrow.
राइट। यहाँ पे आप दो बेनिफिट्स देख सकते हो, यू कैन सी टू बेनिफिट्स। सी बेनिफिट वन इज यू गेट टू प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेनिफिट टू इज you get to win prizes. So you can go ahead, participate in that. This happens 5 p.m. to 7 p.m. कल 5 p.m. से 7 p.m. है, you get to win exciting prizes and you get the analysis on the same day. तो कल संडे का प्लान कर लो 5 p.m. to 7 p.m. फिर 7 p.m. से आप वापस आप ये खत्म करके आप वापस फिर बॉबी मैम का क्लास, मेरा क्लास अटेंड कर सकते हो। एंड this is something that started yesterday, 1st January. These are the three educators, Shabana, Ravi Prakash, and Bharat Gupta. They'll be taking. This is for people who are already good at it and want to be the best. Yes, if you want to take up any of these batches, don't forget to use my referral code. And this is my batch, जो कि 4th को start हो रहा है Monday से. Anybody who wants to think that नहीं sir, New Year तो miss हो गया, but Monday नहीं miss होने देंगे. न्यू ईयर रेजोल्यूशन चला गया, मंडे रेजोल्यूशन अभी तक बाकी है, मंडे से कुछ करना है खतरनाक। तो गो अहेड जॉइन, दिस इज अ प्लस बैच फॉर कैट 2021, एक्सक्लूसिव वीकडे इवनिंग बैच होगा स्टार्टिंग एट 6:30 PM, है ना। दिस विल इंक्लूड क्वांट टेकन बाय मी, verbal ability and reading comprehension taken by Bhagyashree Ghosh, and LRDI will be taken by Sameer Sardana. Done? Yes. For other benefits of Plus, unlimited live classes, get to ask guidance from your favorite educators across the country. You get full statistical data on everything that you've done. There are 200 plus mocks available right now. आगे जाके और बढ़ेंगे, and there are live doubt clearing sessions जहाँ पे आप अपने डाउट भेज के immediately live यहाँ पे, मतलब जैसे हम यहाँ पे नहीं सॉल्व करते स्क्रीन पे, वैसे आप स्क्रीन पे सॉल्व करवा सकते हो। And obviously the ask a doubt feature. Yes. So for all of this, you can use my referral code. Pick up any one of these packages. Sare, everything that we have spoken so far is with respect to any subscription that you take up. एक महीने का भी ले सकते हो, 24 months का भी ले सकते हो, but the most preferred ones are 12 months and the 24 months. Use my referral code Surana Live. The moment you use it, the prices will be slashed by 10%. That means for less than 800 rupees, you can crack CAT. There is no cost EMI options also available. So if you have any questions or queries about this payment procedure, क्या क्या include होता है नहीं होता है, you can definitely go ahead and ask me. Ask me where? In one of these groups. ठीक है? इस पे ये this group is not open for discussion, but this one is. यहाँ पे आप भेज सकते हो मेरे को, ठीक है? Good night, guys. Thank you so much for being a part of this, sir. If, for example, denominator में p square minus q square है रहेगा तो रैशनलाइज होगा। p square minus q square as long as वहां पे कोई रूट नहीं है तो रैशनलाइज ही है ना। Yes, we rationalize it by adding p square plus q square if you want, multiplying p square plus q square, है ना। Chalo, thank you very much guys for being a part of this session. I hope you enjoyed today's session. So informative tha. If you have any questions or queries, go ahead and ask me on the group. I'll see you tomorrow at 8 p.m. Kal bhul mat jana, 5 p.m. to 7 p.m. Your League of Champions would be going on. Thank you very much. Good night. Have a great day ahead. Keep yourself safe and happy. Keep learning. Let's crack it.